how are you all? Hope all are fine, staying at home, not going out. Take precautions, okay? जैसे ही आपके घर में मम्मी पापा बाहर से घर आते हैं, उनको भी आप बोलेंगे कि they should wash their hands again and again. Wash each and every vegetable very carefully. और रॉ वेजिटेबल खाने से पहले उसको बहुत अच्छे से वॉश करना है. रॉ वेजिटेबल, विच वेजिटेबल्स? रेडिश, कैरट, टमाटो, ऑनियन. These vegetables should wash very carefully. Then you can eat it. Okay? Let's start our class. Our today's class is English class. Again we are doing the I sound. And which words we are doing? We will do eager, egg words. Which words? Eager, egg word. Now which picture is this? Which picture? This is pig. This is pig. Now how to write pig? Eager, egg. Put the dot. Before it, we will write P. P, eager, pig. Pig says grunt, grunt. Pig says grunt, grunt. Okay, P, eager, pig. Pig is a animal. And pig has how many legs? 2 legs or 4 legs? Pig has 4 legs. Okay. This is a fruit. And the name of fruit is fig. This fruit is fig. And you know fig क्या होता है? Fig is a fruit but it's very healthy fruit. आप अंजीर वर्ड, हैव यू लिसन द अंजीर वर्ड? जो अंजीर होता है उसको इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड फिग. और अंजीर इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. यू नो अंजीर खाने से क्या होता है? हमारा HB बढ़ता है. एंड व्हाट इज HB? आवर हीमोग्लोबिन, आवर ब्लड. सो हैव अंजीर. Tell your mama, she will give the anjeer. Okay, this is fig. How to write fig? Before egg, we will write F. Again, I will write here F, E, G, fig. This is fig. F-E-G, fig. Before egg, we put here F. F-E-G, fig. This fruit is called fig. And what is this? आप तो बोलोगे मैम this is an elephant. But you know, with this elephant, there is one small elephant. एक small elephant and this is big elephant. Small, big. Small, big. This elephant is big elephant. And this is small because this is baby. You know, an elephant is a big animal. And what the elephant eats? Elephant likes to eat sugar cane. And elephant has a long trunk. Elephant is a wild animal. You all know that. So, before it, we will write here B. B, E,
And don't forget to write burr like this. Don't write burr like this. B को ऐसे नहीं बनाना. Don't make this circle here. ये वाला सर्कल नहीं बनना चाहिए. B का सर्कल, B should be like this. Okay? So, see this picture. What this boy is doing? He is digging. Dig the mud. He is planting this tree. And he will put the water to this tree. Okay? Digging. Dig the mud. Dig the mud. How to write dig? Before A, we will write eager dig. Eager dig. Dig means मिट्टी खोदना. मिट्टी को खोदते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए. व्हाट वी विल डू? मिट्टी खोदते हैं. मिट्टी खोदने को क्या बोलते हैं? डिग. ओके, सी व्हाट्स दिस? What's this? This is a face. और फेस पे ये क्या है? फेस पे ये हेयर है. बट क्या करते हैं? Sometimes we put one wig on our hair. जैसे मैम के स्मॉल हेयर हैं. Sometimes I put long wig. बड़ी बालों वाला विग अपने बालों में लगा लेती है. You want to see that? Let's wait. मैंने क्या पहन लिया? I have small hair, but अभी मेरे बाल कैसे हो गए? Long hair हो गए. So I put a wig. मैंने क्या लगा लिया? Wig लगा लिया और मेरे बाल लंबे हो गए. So this is called wig. So kids, that is wig. जो हम नकली बाल लगा देते हैं, ऊपर अलग से कुछ लगा लेते हैं, बालों की सेटिंग कर लेते हैं, that is called wig. अभी I gave you the example. मैंने मेरे ओरिजिनल बाल पे मैंने अलग से wig लगा लिया था. So this is wig. How to write wig? Before A, we write here V. Which word give the sound of V? W. Eager wig. And what picture is this? आप तो बोलोगे मैम this is a plane. But plane तो है ये. That's right. This is a plane. But this plane has a name. इस plane का नाम है MiG. MiG is a fighter plane. Fighter plane means when there is a war. War हो जाती है जब suppose इंडिया और पाकिस्तान है. इंडिया एंड पाकिस्तान में वॉर होती है. ओके, जब वॉर होती है जो फाइटर प्लेन होते हैं जो फाइट करने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब्स फेंकने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जाएंगे, दैट प्लेन इज कॉल्ड. एक प्लेन है जिसका नाम होता है MiG. दैट इज कॉल्ड MiG. बिफोर ए we will write MiG. Again I will write MiG. MiG is a fighter plane. Again one more time we will revise. Pig. This big elephant. This fig. Fig is a fruit. Dig. Digging the mud. Wig. We put the wig on our hair. MiG. MiG is a fighter plane. All of you will read it from page number 29 in English book. But don't forget to revise A and O sound.
Again I will come with another lesson. Till then, bye.